of getting runs. I think these opening pairs definitely be going to be key for here for the team YSV strikers. If they were able to get a good start, then I think it's going to be a problem for KGF Kings. At the same time, the KGF Kings, they're also got some very good bowling lineups. Just like the experienced bowler like Zubair will going to start always, and definitely they also wanted to restrict them. So it's going to be a very good competition. The match definitely going to be a 50-50. It's going to be anybody's game. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त, और इसके बारे में हम इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे। तो गेंद इस वक्त पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार जुबेर, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ शाकिर ने इस वक्त इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने के बाद रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है YSV स्ट्राइकर्स के लिए। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इस वक्त शाकिर और प्रज्वल की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है। वो अगर एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी टीम यहाँ पर मंजिल की ओर अग्रसर हो सकती है। इस बीच जुबेर की गेंद बाउल्ड आउट, फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर जुबेर। शफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहता, चूंकि पूरी तरह गेंद लगभग उनके बल्ले के अति निकट टिप्पा खाकर लेग स्टंप पर जा टकराए। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और शाकिर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो निश्चित रूप से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी bowled by the bowler, and he just got rid of the batsman. So first wicket is backing to pavilion, and Shakir now departs, and YSV strikers now lose their first wicket. It's 2 for the loss of 1 wicket. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त KGF किंग्स का, तो इस वक्त उन्हें गेंदबाजी जो चाहिए एक घातक गेंदबाजी, और जुबेर में वो क्षमता एबिलिटी मौजूद है कि वो एक बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को गेंदबाजी के जरिए दे सकते हैं, और यहाँ पर वो साबित कर चुके हैं। शाकिर का विकेट उखाड़ने के बाद अब नए बल्लेबाज के रूप में चेतन का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जुबेर दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन के लिए। और ओवर की अगली गेंद, ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप पर आते हुए एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, लगभग लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए, और आखिरकार गेंद को वहां पर विकेट कीपर ने कलेक्ट कर लिया। विकेटों के पीछे रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो इस वक्त स्कोर रुक चुका, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच जुबेर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, अपील, और इस बार रनआउट का खतरा, इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। चेतन का विकेट गिर चुका है। गेंद को बिना देखे रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई, लेग बिफोर की अपील की थी लेकिन अंपायर ने नकार दिया, और गेंद को बिना देखे चेतन आगे निकला है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई, विकेट कीपर के हाथों से छूटी, लेकिन दूसरे प्रयत्न में तेजी के साथ उन्होंने विकेट यहाँ पर चटका दिए, और चेतन का विकेट गिर चुका है। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर YSV स्ट्राइकर्स, और निश्चित रूप से YSV स्ट्राइकर्स के लिए 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार जो घोषित किया गया है इस वक्त उन्हें प्राप्त करना है। तो इस वक्त YSV स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को एक दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग यहाँ पर दिखलानी होगी। और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में रफीक का आगमन होता हुआ, और रफीक का जहाँ तक सवाल है, इस श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी के जरिए उन्होंने दिया है, और यहाँ पर क्वालिफायर मैच नंबर 2 में भी ऐसे ही बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्हें इस वक्त उनके टीम को इस वक्त जरूरत है। और इस वक्त गेंद की परीक्षा करने के बाद गेंद को इस वक्त लौटाते हुए गेंदबाज जुबेर के हाथों में, और ओवर की पहली गेंद अगली गेंद लेकर इस वक्त जुबेर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए रफीक के लिए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका, कुल मिलाकर 2 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। रात के 1:45 बज चुके, इट्स ऑलरेडी 1:45 एट नाइट, और क्वालिफायर मैच नंबर 2 यहाँ पर खेला जाता है। बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, लेग बाई का इशारा, और लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और टाइडी कंटेस्ट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। अभी भी मैदान पर लगभग रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी मैदान पर दर्शक भर चुके हैं,
और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला TCL तुलनाट क्रिकेट लीग सीजन 1 2024 की के नाम से इस वक्त शानदार प्रगति करती हुई इस देर रात में, जो कि मिनी KPL के अनवर्थ नाम से जाना जाता है। और गेंदबाज जुबैर, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले का भीतरी किनारा, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा। बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है जुबैर की। 5 रन सिर्फ उन्होंने प्रदान किए, 2 विकेटें प्राप्त की है और पहले ओवर के 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया, 1 विकेट गिरा था रनआउट के रूप में। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर वही SV स्ट्राइकर से एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। और बचे हुए 6 ओवर का सवाल है इस वक्त और उन्हें चाहिए 44 रन विजय के लिए। 36 बॉल्स लेफ्ट, 44 रन रिक्वायर्ड। और इस वक्त प्रज्वल सामना करने के लिए तैयार। और प्रज्वल जिन्होंने इस श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है, खासकर इस ऋतु में भी जब वो गोरी बॉयज का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया है। और यहाँ पर भी ऐसा कहना पड़ेगा उनके कप्तान जो कि YSV स्ट्राइकर्स के कप्तान उनके बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा यहाँ पर कर रहे हैं बल्लेबाजी के जरिए। और देखना ही है कि वो अपने कप्तान के उम्मीदों सहाकार को उम्मीदों अपेक्षाओं को किस हद तक साकार कर पाते हैं। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए निजाम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद उछाला इस वक्त प्रज्वल ने। और जैसा कि मैंने कहा, प्रज्वल इज ऑन फायर। मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड लफ्ट दैट वन इन स्टाइल। और इस श्रृंखला में जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने दिखाई है, उस फॉर्म की यहाँ पर उस परफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हुए खूबसूरती के साथ काफी गेंद को ऊंचा उछाला था। और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पार हो चुकी है 6 रनों के लिए। तो छक्का इस वक्त जुड़ चुका है। और नितिन कोट्टारी अमला मगर ने 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार YSV स्ट्राइकर्स को घोषित किया अगर वो इस मैच में विजय दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर YSV स्ट्राइकर्स को अगर विजय दर्ज करना है तो प्रज्वल की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। और प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद एक बार फिर से, लेकिन इस बार नॉट क्वाइट मिड विकेट बट इट गॉट द डिस्टेंस एट लास्ट। 1 बाउंस इनटू द फेंस। और गेंद हालांकि सीमा रेखा के अंदर टिप्पा जरूर खाई थी, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। छक्का और चौका। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद मिडल ऑफ द बैट नहीं टकराई थी, लेकिन इनफील्ड क्लियर करती हुई निकली और आखिरकार 1 या 2 गज अंदर गेंद टिप्पा खाती हुई सीमा रेखा के। और चौका यहाँ पर प्रज्वल और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। और जैसे ही प्रज्वल के बल्ले से छक्का और चौका लगा, तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त प्लेयर्स डगआउट से सुनाई दी YSV स्ट्राइकर्स के। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर निजाम तैयार था। ना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई प्रज्वल ने गेंद को उछालना चाहा, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। 1 रन का इजाफा, लेग बाई का इशारा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट तुलनाट क्रिकेट लीग सीजन 1 2024 के अंतर्गत खेला जाता हुआ। और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है YSV स्ट्राइकर्स और KGF किंग्स के बीच। बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद रफीक के लिए स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा। पैर से लग कर आए हुआ स्ट्रोक। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। माफ कीजिए, स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रज्वल बैक ऑन स्ट्राइक, पावर प्ले इस वक्त जारी। और गेंदबाज निजाम इस वक्त तैयार। यह गेंद प्रज्वल के लिए आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम निजाम। और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 1 गेंद अभी भी बाकी। और इस बीच निजाम इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल के लिए। ये गेंद इस बार प्रज्वल के लिए लेग स्टंप पर उखाड़ना चाहा, नॉट स्ट्राइक करने पर रफीक का आगे निकल आए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है।
डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ विकेट कीपर का फेंका गया हुआ थ्रो सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे। स्ट्राइकर एंड के नॉन स्ट्राइकर एंड के उन्होंने देखा कि रफीक काफी आगे निकला है, निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और रफीक का विकेट यहाँ पर गिर चुका। निस्संदेह रफीक का विकेट का पतन इस वक्त उनके लिए कुछ हद तक मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब ये साझेदारी जम ही रही थी कि यहाँ पर रफीक का विकेट गिर चुका है। अब तीसरा विकेट खो चुका है वाईएसवी स्ट्राइकर 17 रनों के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed, 17 runs on the board, 3 wickets lost and still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in their innings. तो 5 ओवर का खेल बाकी, 30 balls remaining and still they have to get 32 runs for victory. 32 runs to get from 30 deliveries. The match is now still in balance. नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इस वक्त अश्विन इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए जुबैर जो कि अपने पहले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और जुबैर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंची। इस वक्त ऑफ कटर गेंद थी, पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज को रन मिला 1 और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। फिर से एक बार जुबैर इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल जो कि बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों पर 11 रन अब तक वो बना चुके हैं। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और गेंदबाज इस बीच जुबैर की गेंद, अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन इस बीच नहीं मिला। हर रन के साथ तालियों के गड़गड़ाहट इस वक्त सुनाई देती हुई वाईएसवी स्ट्राइकर्स के डगआउट से, जबकि हर डॉट गेंद और हर विकेट के पतन के साथ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हुई इस वक्त केजीएफ किंग्स के डगआउट से। इस बार दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का जोशो उत्साह बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ हल्के से गेंद को कलाइयों के साथ रिफ्लेक्ट कर दिया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए प्रज्वल ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अश्विन सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई सही तरीके से अंपायर पुष्पराज ने इस अपील को नकार दिया और 1 रन इस बीच जुड़ चुका है उनके खाते में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। लेग बाय का इशारा अंपायर का और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, फॉरवर्ड शॉट लेग की दिशा में गेंद पहुंची। गेंद तक फीडर पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 1 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। 27 और रन चाहिए विजय के लिए, 25 गेंदें बाकी। 27 टू गेट फ्रॉम 25 बॉल्स। जुबैर इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ पर रन्स नहीं मिलेंगे और डॉट गेंद यहाँ पर जुड़ता हुआ। एक और बेहतर ओवर जुबैर का समाप्त हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन जोड़ चुका है इस वक्त वाईएसवी स्ट्राइकर्स 3 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर्ड बाय YSV strikers and as far the run rate is concerned, 27 to get from 24 deliveries and the required run rate is now for them is exactly 6.75 runs per over. Still they got 7 wickets kept intact, 7 विकेट सुरक्षित और निश्चित रूप से मैच का जहां तक विजय का सवाल है अभी भी ऐसा करना पड़ेगा। It's going to be 50-50 at the situation और रात के 2 इस वक्त बचते हुए और बिल्कुल सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका, पिन ड्रॉप साइलेंस और निश्चित रूप से दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और देर रात इस वक्त हो चुकी है और घने अंधेरे को चीरकर फ्लडलाइट्स की खंबे की बत्तियां इस वक्त मैदान पर गिरते हुए इस
मैदान को प्रकाशमय और बनाते हुए निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन क्वालिफायर मैच नंबर 2 इस वक्त प्रगति पर YSV स्ट्राइकर्स और KGF के बीच, KGF किंग्स के बीच, और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है ये दोनों टीमों के बीच में। और गेंदबाज साहिल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था। इना ओवर द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी, गेंद को इस वक्त खेला पॉइंट पर, गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रज्वल बैक ऑन स्ट्राइक, माफ कीजिए, प्रज्वल ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं इस वक्त और अश्विन सामना इस वक्त करने के लिए तैयार और गेंदबाज साहिल फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, लेग बाई का इशारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. So it's going to be a really a testing time for the both teams players at this situation. 4 गेंदें बाकी और 4 गेंदों में देखते हैं बल्लेबाज YSV स्ट्राइकर्स के इस ओवर में कितने रन और बना पाते हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress। और गेंदबाज साहिल एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन लेग कटर गेंद थी इस वक्त, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, लगभग जमीन के सहारे गेंद थी। हालांकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो इस वक्त रिव्यू लिया गया है और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 3.3 ओवर का खेल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और प्रज्वल और अश्विन इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए खेल की रणनीति के बारे में कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए उन्हें इन हालातों में। और नो वाइड, राइट डिलीवरी, इट्स अ फायर डिलीवरी और एक गेंद डॉट उनके खाते में जुड़ चुका है और एक गेंद के साथ स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर। और साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट साहिल अपनी ओवर की छठी गेंद लेकर इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक लेग कटर डिलीवरी और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 26 ऑन द बोर्ड, 23 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज और मैच अभी भी बराबर पर रुक चुका है। हालांकि इक्वेशन कुछ हद तक कठिन जरूर है लेकिन बाउंस बैक करने का मौका यहाँ पर जरूर है YSV स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के लिए। और देखते हैं 3 ओवर में उनके पारी में क्या होता है। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। और सतीश, 23 in 18 बॉल्स, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 3 ओवर में एक बेहतरीन रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखते हैं कौन टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। Exactly, Govi, and the match is definitely going to be evenly poised because I'm saying this because Prajwal is still there in the middle. Having him in the middle and Ashwin, one more, the batter is in good form in the previous tournament, but slight bit of struggling here and to get the runs on the board, but still he can bounce back now. 23 runs required from last 3 overs and bowler will go into bowl. It's 5th over, Nizam from the commentary box and right arm over the wicket. Just
The appeal is going on here. I don't know for what. It's a bowled out, I think so. Just I wait for the umpire signal. And now umpire asking for the third umpire. What really happened? Umpire just referring for the third umpire to see what really happened. Wait and see. And sometimes it's very difficult to see when the under floodlight, when a quick delivery is very close to the off stamp, and umpire straight away asking for the third umpire to give the decision. Ashwin, just have a look at it on replay, what really happened. Just umpire will going to decide whether the ball kisses the stumps and then hits the wicket keeper. Wait and see. The Bedra Media cameraman definitely will going to give you the perfect angles to get the result of this. It looks like the batsman is in a danger, but umpire doesn't want to take any risk here after having a technologies is very much advanced in this underarm cricket also, just like in international cricket. And looks like the batsman. So umpire will going to see, because they're taking their own time. They doesn't want to make any hurry here. Now it's a very difficult sometime. It's going to be a very interesting. It's not like that. It's going to be very interesting, I want to say. It's not so easy decision now for the umpire, because even the ball after hitting the hand of the wicket keeper then fell into the stumps. It's going to be a very close one. That technology all will going to be definitely going to be tested, but even the umpires will going to test. Now it's a bowled out call by umpire. Is gone. Is gone. Ball just kissing the stumps. Of course, even the ball also hitting the hands of wicketkeeper fell into the stump. And that's what the umpire have to see, whether the ball after kissing the baser off, or it was from after hitting the hands of the wicketkeeper, then it's off. That's what umpire have to see. And this is what really, sometimes you need to take a little bit time. You can't give the decision immediately. After two, three angles, 3-4 angles, you will going to get the result. Now, the new batter coming to the middle. Yes, balled out. Ball hits the stumps. So slight bit of confusion is going on. Not for the confusion for the umpires, but for the confusion for the supporters of YSV strikers. It's a bowled out. Please note that it's a bowled out, because in mobile, I think we can't get that much of clarity. But in our camera work, of course, giving a lot more clarities. Sometime in the naked eye, it looks like it's going to be not out, but if you see it in a different 3-4 angles, but in our mobile, we are getting only one angles. But here in our third umpire room, the cameramans will going to give 3-4 angles. Then afterward, after looking at angles only, they will go into, yes, giving the decision. So 26 for the loss of 4 wicket, and 23 more runs required for the victory from 17 balls. And new batter in is Sahil. Will going to face next delivery from Nizam. Right arm over wicket. Went for the sweep shot. Ball is in there for a while, but
Ball, of course, getting some bat and went into that third man region. One more single. 26 for the loss of 4 wicket in the over. Number 5 is in progress. Now the wicket. Now Zubair will go to continue from the little correction. Nizam will go to continue from the commentary box, and Prajwal back on strike. Whenever the Prajwal back on strike, some kind of excitement. What will going to happen in the very next ball? That's what they need to see as the Prajwal is batting on 14. Nizam bounce. This time across the line, wanted to swing that, not quite getting a hold of that one. Will come back second. Prajwal not interested, rightly so, because losing Prajwal in this occasion, that might be the more pressure for team YSV strikers. So that he doesn't want to take any risk. He wanted to g- bat till the end, until he will going to get his winning run for his team. And then the team, KGF Kings also knows that how dangerous to keep this man in the middle for a long time. Sahil is on strike. Nizam bowling away from us. Right arm over the wicket, drives that one down, takes a coverage, and oh, what a throw! But it's a little bit wide throw coming from the fielder. And both the batters complete that quick single in the occasion. Back under throw from that fielder, but not good enough to stop the single. With that single, Skopan was on to 28 for the loss of 4 wicket in the over. Number 5 is in progress. Again, the bowler will go to continue. Nizam, and the Prajwal back on strike. Having some mud to his hand because of wet hands. He need to drive with that mud. Again, right arm over the wicket. Wanted to go for the big shot. No, and again, not quite getting that one into his bat. It's going to be a very good contest, isn't it? Prajwal punished him. Prajwal punished Nizam in the first over. The one more single is been added total with that single score by Namuzan to 29 for the loss of 3 wicket. Now it's a 30 repercussion. 30 for the loss of 4 wicket. In the over number last is fifth is in progress. This time wicket keeper Ashraf half stopped. Very, very important dotted deliveries. Very important dotted delivery from Nizam. After completion of over number 5, chasing a total score of 49 to win this match. It's 30 for the loss of 4 wicket, 2 overs remaining, and 19 more runs required for the victory. 12 and 19. 6, 7, which is the difference between run and ball. And well, wait and see. $30 for the loss of 4 wicket. So 19 more runs required for the victory.
So 30 for the loss of 4 wicket and 2 overs which is remaining and they needed to get 19 runs to win this match. Oh, that's going to be a appeal. Umpire. This is really, it's a really comedy of errors. If we say that the bowler almost very close to the umpire, Roland Pinto, and asking. Very, very interesting appeal coming from Sahil. Almost is begging to umpire and in front of umpire to that caught behind. And the umpire is given the third umpire. Now a very popular figure, Anif, entering into the ground. All crowds are shouting. The big Oz and goes around the ground. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸಹಿಗಾಗಿ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ and Anif enter the ground and big cheers coming in crowds. That shows the popularity of Anif, being the manager of KGF Kings. This is a fair delivery called by third umpire. And I will see that in the replay, that is a appeal coming from Sahil. That's why I got a lot of laughter here because of the way that appeal coming from Sahil is very interesting for umpire Roland Pinto. And now Bedra Media, even Althaf can't stop his laughing, saying that Shayaz, the kind of appeal is made for that caught behind. It's a fair delivery call by the umpire, so that please continue. 30 for the loss of 4 wicket. Again, the bowler Sahil to continue from the far end. Prajwal will go into the striker. Now have a look at that one, a replay again. The Sahil's appeal. This is a kind of appeal. If you see that in the replay, this is umpire Roland Pinto just going one step back. he thought that Sahil is coming into him, whether he is appealing or not. That was excellent camera work there by the Bedra Media cameraman. After that, the seeing that appeal. $30 for the loss of 4 wicket. Prajwal will go to continue. Sahil to continue from the far end. Right above the wicket, the supporters for both the teams in this late night, they are on their feet. Right above the wicket, balls to Prajwal, top edge, opportunity created for the catch and it's gone! The danger batsman, Prajwal is back into pavilion. Sahil strikes with a beauty. Well, this is the one wicket what they really wanted. The Prajwal back into pavilion. It doesn't, of course, he wanted to get the big shot on the onside region. Doesn't hold up that one properly. Again, Anif is entering into the ground. The wickets are falling. The Anif will go into enter the ground. Not only is bringing the water, I already mentioned, is getting some messages from the dugout. And so all we can see that in cricket, some kind of fun which is required in this late night, lazy night. There are 2 fast 15 in the late night. It's 30 for the loss of 5 wicket. Team YSV strikers are struggling to get the runs on the board. 19 required, 10 balls remaining. One big shot which is badly required. And the man who's came into middle has got a capability of doing that. It's none other than one of the huge name in Underarm cricket as far as big stroke is concerned. It's none other than
Althaf Walpadi. He came into middle, and 19 required from 10 balls. Very surprising to see that why he's been kept in the middle order. He is such a good striker of the ball who can use the power play very well. But in this match, he's been sent back. Wait and see how the strategy will going to work out here. There's a ball for it, top edge. Oh, fielder couldn't manage to run back quickly. Then they're coming back for the second. In comes the throw. And they're going for the third. No, they're not going for the third here. The fielder, Harish, while he's there, tried to go back to... he just fell down. Lost his balance. Couple of runs has been completed. With that couple of runs, Koban Muzan to 32 for the loss of 5 wickets. 17 runs required from 9 balls. What a match. Althaf Walpadi. Can he able to change the complexion of this game? Of course, why not? But even Sahil, so far, did a great job from the ball. But job which is not yet over. He need to get another 3 good deliveries. But Althaf Walpadi need to get 1 big shot. Here he go. Right up over the wicket. Althaf wanted to go for the big shot. Misses the line completely. Wicket keeper behind the stump. Ashraf, in a fraction of second, completed the job. But not for the result. But just for just an excitement. The crowds are alive. The supporters of KGF Kings just started to dream to get the place in the mega final. And lot of hard work required for YSV strikers to get back into this game. 25,000 from Kiran Kottari, Amlamagaru. Already announced. The YSV strikers, if they wanted to get in the final, if you wanted to get that 25,000, they need to get the remaining runs, 17 in remaining 8 balls. Here you go, right up over the wicket. Althaf Walpadi going for the big shot. They're going for the quick single. Chance of run out. Harish couldn't manage to return the ball quickly to that. The bowler 1 run completed after completion of over number 1 ball remaining, 7 balls remaining. 7 balls remaining. 16 required. 1 big shot which is badly required. Sahil is a striker. Deep long on, deep long off. Deep cow point. Deep mid wicket, deep square leg. The fielder on the deep. Short third man, backward point. Short extra cover. Short mid wicket. The fielder inside the ring. Decider delivery. The last delivery of the over number 6. Right arm over the wicket bounce. This time wanted to go for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket. Again Sahil is a unique style of appealing. This time is gone. Sahil is gone. Try to get the couple of runs. Leg by call by umpire. And with that addition of that single scope, but now moves on to 34 on the board. That means still they have to get 15 runs in the last over. Still, if you think that thinking that only the crowds watching here in UCG cricket ground in 2 past 25 in the late night, but still 2,000 viewers watching live in YouTube channel. This is shows the popularity of this cricket tournament. 2,000 in this 2:30 late night watching. Umpire saying is a time limits, which is they completed the time limits, so that need to bring 1 fielder inside the ring. And we'll go into ball that last over. Acha Banur. Ali Skywalk ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Skywalk ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. I request all the players of Skywalk, please be reported for the signatures. Well, last over, decided over. Althaf Walpadi, danger man. Althaf Bashavarnagudi, 2 Althafs are in the middle. Can these 2 Althafs will going to do the job? Wait and see. Both are very good striker of the ball. Acha Banur. Althaf wanted to go for the big shot. Oh my goodness. Ashraf. It's not a area
where you can feel comfortable. This is one of the softest part of your body. This is absolutely one of the softest part of your body. Oh my goodness, look at that. Look at that reaction of Ashraf. My goodness. Maybe it was a fun thing to laugh, but it's not a fun thing, I want to surely say. For the wicketkeeper, most of the times getting that kind of heart. Once again, Anif is in the picture. The busy man in this TCL, and very popular man. Anif once again with the water. That's why sometimes I'm thinking about that's the abdominal guard, even required for the underarm cricket also, especially for the wicketkeeper and for the bat. Wicketkeeper, the most of the times getting that much of art. It's not so easy, I want to say. And I think Mohan Ayadi is agree with my point. He's also a very good cricketer. Even Arish Padil, they're all former cricketers. And this is the one, my friend Gopi, very relaxing, having some fun here. Oh, this is absolutely hurting him a lot. This is really hurting him a lot. You can see that Ashraf is not really good enough. Of course, needed some kind of exercises. And I think Pushparaj sir will going to give some exercises for it, being the coach, being the physical director, the former physical teacher also. He will definitely going to give some tips for the wicket keepers. What kind of exercise which is required when you are having that kind of heart. Now one if in the screen, have a look at that one. He is just like a Virat Kohli running here. This is the one exercise, absolutely. When you are hitting that place, you need to do the jogging, little bit jumping, and we'll make a little bit relaxed. It takes a little bit time, isn't it? It's not so easy immediately to come back. Absolutely. And now, everything is ready here. Right arm over the wicket bounce. This time he loved it. Althaf, ball party, clearing the ground. Yes, he does. Now crowds are alive. Now crowds are alive. Have a look at that stroke there from Althaf, ball party. Lofted that one down to deep log of region. And ball just sailing and going and hitting the wall of the commentary box. Now this is going to be absolutely the turning point of the match. Have a look at the high bat lift. And Althaf lofted that one. And scoreboard absolutely is one of the strongest bottom hand player. And have a look at that stroke. Absolutely hitting the wall. No chance. 40 for the loss of 6 wicket. 9 runs required for the victory. 4 balls remaining. 9 runs required for the victory. Match is not yet over. Match which is not yet over. All right, above the wicket again. It's going to be a pressure. It's going to be a pressure. Now we can see this is what you call the cricket is all about. You can't say anything cricket. The cricket is game of glorious uncertainty. If Althaf Walpadi will going to win this match, he will going to get 15,000 rupees. He will going to get the 15,000 rupees announced by YSV strikers. All right, above the wicket, Althaf going for the drive, inside edge of the bat. Will they come back for the second? No, it doesn't. It doesn't. Althaf Walpadi out of the strike. But nothing worried about that. Another Althaf is there in the other end. Althaf Basavanagudi. Now it's Althaf Basavanagudi. 42 for the loss of 6 wicket. 7 required from 3 balls. 7 required from 3 balls. One more very good striker of the ball. Althaf Basavanagudi is on strike. Althaf Walpadi is in non-striker's end. Here we go. Right above the wicket. He driven and he got the distance. That's what you're talking about. 2 Althafs are
in the middle, changing the complexion of the game. This is all about the two Althafs, Althaf Walpadi and Althaf Basavanagudi. What a match! What a match! 1 run required from 6 balls. 2 balls to be correction. 1 run required from 2 balls. Have a look at the stroke from Basavanagudi. Oh my goodness. This is a really like in the late night, just like a stroke from the cannon. Stroke from the cannon. Acha Bannur is being punished. YSV strikers back in the game. 1 run required for the victory. 2 balls remaining. That's it. YSV strikers won this match. And all are entering the ground. Celebration begins. Celebration begins. Keeping 2 Althafs down in the order, really working out. Keeping the 2 Althafs are keeping in down in the order for YFC strikers, really working out. But Acha Bannuru, who became the hero in the previous match, he's become the villain in this match. This is the cricket is all about. The one team, one match, you are in a high